Welcome to today's Health in Focus show on Sunrise Radio with myself, Raj. Today I'm joined by Dr. Dinesh Saralaya and Dr. Abid Aziz. Thank you for joining us today to discuss COVID-19 and the vaccine trials. For the benefit of our listeners, the answers to the questions will be in English and in Urdu. Dr. Saralaya, let us start with you first. Welcome to the show and thank you for joining us. Can you tell us what vaccine trials are planned in the United Kingdom and this year and next? Thank you, Raj. So as you know, the exit strategy from COVID-19 or the dreadful coronavirus pandemic is to produce a vaccine that will immunize the entire population so that we don't come to the harmful effects of the virus. That's the only way. You've heard that the prevalence of COVID-19 in the country is that it is only affected between 6 and 10% of our total population. So there's a vast majority of us who have not had COVID-19 and are still at risk of developing COVID-19. To this effect, the UK is about to run between 8 and 10 phase 3. What they mean is these are trials in the late phase of development. They've already been through early development, but in phase 3, efficacy vaccine trials, COVID vaccine trials, between the months of September 2020 and March 2021. So for the next 6 months or so, we're going to be running these trials in selective centers across the UK. Within the Yorkshire and Humber region, the city of Bradford and the Patient Recruitment Centre, which is hosted by Bradford Teaching Hospitals, will be running at least 3 to 5 COVID-19 vaccine trials as we are one of the major vaccine research hubs across Yorkshire and Humber. And this is only to the benefit of our population. What these trials will be doing is to test the efficacy of the virus, which is of the vaccines, which have already been through the early phase of development. That is, they've gone through healthy human volunteers and a small proportion of patients in a real life scenario. But now we need to vaccinate larger proportion of our patients so that we are able to produce a vaccine which produces an immune response in our body and which will work against COVID-19. So to that effect, we are getting ready to run these vaccine trials in Bradford. Thank you, Dr. Saralaya. Dr. Aziz, if I could, welcome to the show firstly, and if I could ask you to give the answer in Urdu. ये कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है इसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और हमें पता है कि ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है, अंदेशा है कि ये भी चलती रहेगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ मेजर्स ले रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फेस कवरिंग्स वगैरह हैं, लेकिन एक वैक्सीन की अशद ज़रूरत है और पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, जो बड़े एक अहम ट्रायल्स हैं, वे यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, चाइना में हो रहे हैं। और जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं होगी, हम इस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर सकेंगे, तो इस वायरस को प्रिवेंट करना मुश्किल है मुकम्मल तौर पे। तो इस वक्त ये अगले चंद माह में, अगले 5-6 माह में यूके में तकरीबन 8 से 10 क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स चलेंगे। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है कि ये फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है जिसमें वो वैक्सीन की सेफ्टी को असेस किया जा चुका है। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल उससे बड़ा होता है जिसमें उसकी सेफ्टी को देखा जाता है और उसकी अर्ली एफिकेसी या इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल वो ट्रायल है जिसमें हजारों पेशेंट्स को शामिल किया जाता है, जिनमें उनमें एक मेडिसिन या वैक्सीन दी जाती है देखने के लिए कि वो सेफ है और वो इफेक्टिव है या नहीं। तो इस वक्त यूके में प्लान है कि अगले चंद माह में 8 से 10 क्लिनिकल ट्रायल्स चलेंगे, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। उनमें से 3 से 5 जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो ब्रैडफोर्ड में हम होंगे, जो ब्रैडफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, ब्रैडफोर्ड रॉयल इन्फर्मरी में। तो हर क्लिनिकल ट्रायल में हमारा इरादा है कि 3 से 5 क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे ब्रैडफोर्ड में। हर ट्रायल में तकरीबन 500 पेशेंट्स हमें चाहिए, तो टोटली हमें तकरीबन 2500 पेशेंट्स की ज़रूरत है
और ज़्यादा पेशेंट्स को पहले हम स्क्रीन करेंगे, फिर देखेंगे उनमें से एलिजिबल पेशेंट्स कौन से हैं। So ultimately हमें तकरीबन 2,500 पेशेंट्स या मेंबर्स ऑफ द पब्लिक उनकी ज़रूरत है जो ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करें। Thank you very much, Dr. Aziz. Moving on now, I mean, looking at the NHS digital site, we have 224,103 volunteers signed up already. How many more do we need, Dr. Saralaya? Thank you, Raj. And this is a huge credit to all our people and our community for having registered. So last Sunday, on the 15th of August, this count was only 112,107. So it's virtually doubled in a week. And a huge thank you to everyone who signed up. But for phase 3 vaccine trials, as Dr. Aziz mentioned, we need hundreds of thousands of people because we need to have a large database, because we need to be trialing the vaccine and vaccinating larger number of patients to test the efficacy, because only then we will know that it translates into real life efficacy when it is then given as a vaccine for the general public. So to that amount, we need hundreds of people, hundreds of thousands of people to volunteer to register. But more importantly, it may be 222,000, but as of last week, only a mere 3% of those signups were from the South Asian population, which is so disproportionately affected from COVID-19. We talked about Bradford being a center, but this trial is being run across centers in the whole of North England and across London as well. So all the areas where we have big South Asian community, because we know that COVID-19 has decimated people's jobs, it has decimated businesses, it has ruined patient families, because it has killed some member of our family in Bradford. Every patient belonging to the South Asian background have lost family members, because we know that COVID-19 has disproportionately affected that population. So when a COVID-19 vaccine is produced, we need to make sure that that vaccine works in our population. And I say ours because we belong to this Bradford community, but also the entire South Asian community for the entire country. Across, we know that all the pockets of COVID-19 are around Manchester, Blackburn, Rochdale, Bradford, Kirklees, Halifax. So we want all these people there to register their interest on the website. And it's important we have this large number of people, so that when a vaccine is trialed, it is trialed in a population which is representative of the UK population. It's no point if a large number of whites just register into this trial, and we know that it will work in that population. But we need to know that our patients belonging to the South Asian community also take part in these trials, so that we know that the vaccine can produce the desired immune response amongst us as well. So it's really important. Thank you and congratulations to all the people who have registered on the website. Without your help, we couldn't have 224,000 people, but we need more. We need hundreds of thousands more. And more importantly, we need people from the South Asian community to also register on the registry. Thank you, Dr. Saralaya. Dr. Aziz? Yes. ये कोविड वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं उसमें ज़रूरी है कि पब्लिक या आवाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वॉलंटियर करें। हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की ज़रूरत है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नेशनली और ब्रैडफोर्ड में, जिस तरह मैंने कहा कि कम से कम हमें 2,500 पेशेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा इजी है, ये आप नेशनली जा सकते हैं, नेशनल वेबसाइट पे जो कोरोना वायरस की वेबसाइट है, तो उसमें स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और बड़ा इजी है। दूसरा हमारा ये इरादा है कि नियर फ्यूचर में हम ब्रैडफोर्ड में लोकली इसको एडवर्टाइज करेंगे, कैसे लोग रजिस्टर करेंगे। एक लोकल वेबसाइट होगी जो हम रेडियो पे या काउंसिल के थ्रू हमारा इरादा है इसको हम एडवर्टाइज करें। तो ये कोविड-19 में हमने ये देखा है कि सारी पॉपुलेशन सब ग्रुप्स जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं। जो कॉकेशियन या वाइट पॉपुलेशन थी या जो बेम पॉपुलेशन थी, सब लोग अफेक्ट हुए, यंग लोग, ओल्डर लोग जो थे। और हमने ये देखा है कि जो बेम पॉपुलेशन थी, जिसका जो एक बहुत बड़ी बेम पॉपुलेशन है ब्रैडफोर्ड में, पाकिस्तानी और इंडियन लोगों की, साउथ एशियंस की,
उनमें ज़्यादा सिवियर डिजीज़ का अटैक हुआ है और ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन्स हुए और ज़्यादा डेथ रेट हुआ है। तो इसलिए जब कोई भी वैक्सीन को जब हम ट्रायल करते हैं कि ज़रूरी है कि वो सारे पेशेंट ग्रुप्स जो हैं या पॉपुलेशन ग्रुप्स उनमें इसको ट्रायल किया जाए। तो नेशनली तकरीबन 3% जो लोगों ने वॉलंटियर किया या रजिस्टर हुए हैं वो साउथ एशियंस हैं। तो 97% जो वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मोस्टली वाइट पॉपुलेशन है। लेकिन अगर एक हम ट्रायल वैक्सीन को ट्रायल करना चाहते हैं ख़ास तौर पे और बाद में यूज़ करना चाहते हैं साउथ एशियंस में, तो वो ज़रूरी है कि वो साउथ एशियंस इन ट्रायल्स में हिस्सा लें ताकि हमें पता चल सकते कि ये वैक्सीन अगर हम बाद में देंगे इन पॉपुलेशन ग्रुप्स को, उनमें क्या ये वैक्सीन सेफ है और क्या ये इफेक्टिव है इन लोगों में। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ब्रैडफोर्ड के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो एशियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान, इंडिया से, कि वो वॉलंटियर करें और वो जो नेशनल वेबसाइट है उस पे रजिस्टर हों। वो बड़ा ईज़ी प्रोसेस है, या नियर फ्यूचर में हम बताएँगे कि जो लोकली वो कैसे रजिस्टर होंगे। Thank you very much, Dr. Aziz. Now, Dr. Saralaya, you mentioned a website. Is that how people can register to participate? Yeah, so nationally, the website can be accessed very easily. It's www.nhs.uk/coronavirus. It asks you, how can I volunteer to join a COVID trial? And that it says volunteer for COVID vaccine. Within Bradford as well, we are going to be developing that, and there will be access. But for people who are your listeners outside Bradford, it is very important that we access this website, which is the National Registry. So what happens? It's a very simple process. It asks you 2 or 3 questions about yourself and a valid email address. And I've done it myself. I've registered. And when you validate the email address, you get a link sent to your email ID, just like any other validation of an account. When you click on that email, that link, it takes you to a website which asks you 2 or 3 questions about yourself, your sex, your age, your location in terms of your house postcode, and any coexisting illnesses that you may have, and the age bracket. And then you register, and it tells you a certificate that says you have been registered, and we will contact you if there is a vaccine trial in your location. So it's a very, very simple process which won't take more than 4 to 5 minutes. And by doing that, you are playing a very, very large role in the national effort to beat COVID-19. So please help us. Thank you. Dr. Aziz? Yes, वो जिस तरह मैंने पहले कहा है कि वो नेशनल वेबसाइट है, उसको अगर आप उस पे जाएं तो बड़ा इजी है। उसके 2-3 स्टेप्स हैं, आप फॉलो करें और रजिस्टर हो जाएं। और उसमें ये है कि जिन एरियाज में कंट्री में क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे कोविड वैक्सीन में, के तो उनको जो वॉलंटियर्स जो हैं उनको ऑटोमेटिकली हम कांटेक्ट करेंगे और फिर हम उन्हें ऑफर करेंगे कि वो ट्रायल सेंटर जो हमारा है ब्रैडफोर्ड रॉयल इन्फर्मरी में बेस्ड है, वहाँ पे आए ताकि हम उनको मजीद इंफॉर्मेशन दे सकें ट्रायल के बारे में। Fantastic. And also, what does the volunteering involve, Dr. Saralaya? So volunteering involving a COVID vaccine trial, COVID-19 vaccine trial, is just like taking part in any other clinical trial. The first step in a trial is that you will be contacted once you express your interest into the COVID-19 registry. You will receive a phone call if you are in the Bradford postcode, or similarly you are outside the Bradford postcode, from the nearest vaccine trial center. They will contact you and ask you a few questions about whether you have the interest in taking part. Remember, in clinical trials, nothing can proceed without voluntary consent of the patient. We call it informed consent. So what that means is we'll bring you into the clinical trials unit and explain about the trial in very simple languages to you. And we are developing materials in all the languages, namely Urdu, Punjabi, Gujarati, Bengali, so that we can access the population. And once you've read the information, you sign voluntarily consent form that you're taking part. Only then can we proceed. Now, I have to also remind your listeners that the protocols of these vaccine trials have been strictly peer-reviewed, designed by experts in the field of vaccines. They have passed through governance processes, checks, and ethical consideration.
So they have been through ethic committees who have said that these trials can take part in the UK. So not only they've gone through rigorous setup processes, we have also developed tools that people can understand what it means is to take part. Once you signed consent, then what happens is the first step is we carry out a physical examination to ensure that you are stable to take part in the next stage. Now, either on the same day or the next day, you will then receive a dose of the vaccine or an equivalent placebo. So you must remember that all of these trials have what we call a placebo arm, which is not the actual vaccine, but it's to see whether that's the only way we can compare it to prove the efficacy of the vaccine. So we will not know, it will be blinded, we will be blinded, the people administering that vaccine will also be blinded. Then, in many of these trials, you may have to be called back to have a second dose, maybe after 14 or 21 days. Okay? And then once you have a second dose, you will be, just before you have the dose, I forgot a step, is that you will be swabbed to see that you don't have active COVID-19. So it's just like the swab which is done to test COVID-19. Then after you have the dose of the vaccine, we will measure by blood tests whether you're mounting an immune response, immunity to the COVID-19. That can be done by only taking some blood samples. That will be taken probably 2 or 3 samples. And patients may also ask me to swab themselves, because the only way we know that the vaccine is working is that you are carrying out your normal life, but you don't get COVID-19, because that's how you know. And this follow-up in some of these trials can carry on for up to a year or 2 years. So you can realize how vigorous the trial has to be before we get a vaccine which will really work in COVID-19. So this is what is the reality, that we need to conduct this trial in a proper, coordinated manner, involving all sections of our community, monitoring them very closely. So people may also then ask, what can I have? If I get the dose of the vaccine into my arm, it's usually given into the hand. It's a very small dose of the vaccine. And we then monitor you for what we call side effects. Most of the side effects are very trivial. They can have a bit of pain at the site of the injection, a bit of redness, and a few days later, some people may develop a mild fever. But that is not COVID. Remember that. This is not COVID virus, which is injected in its true form. So it may develop what we call mild side effects to the vaccine. But remember, the trial nurses and the team conducting the trial, in our own case in Bradford, will be monitoring you very closely. You'll be asked to fill a diary. There'll be a contact number. We'll be daily telephone contacts with you. So you'll be very, very closely monitored through the trial to ensure that it's safe. Remember, volunteer safety is the prime importance for us in taking part in any trial. And we follow what is got good clinical practice, GCP. And it's very important that the patient is the foremost in the trial, not us. It's the person who's actually volunteering is the most important part of that jigsaw. So we will be keeping a very close eye, and that is what is the simple way of what is involved in taking part in the trial. Dr. Aziz? इसमें जो members of the public volunteer करेंगे ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए, उनको हम बुलाएंगे ब्रैडफोर्ड रॉयल इन्फर्मरी का जो हमारा रिसर्च सेंटर है. तो उसमें ट्रायल जो वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो सब्जेक्ट है या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये ट्रायल में क्या होगा, क्या नहीं होगा. उसके बाद अगर वो रजामंद होते हैं तो हम उनसे कहेंगे कि ये एक हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसमें उन्हें बताया जाएगा. फिर वो अगर रजामंद हुए तो फिर वो कंसेंट फॉर्म जो उसको साइन करेंगे. तो उसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं वैक्सीन एंटीबॉडीज को देखने के लिए और थ्रोट स्वैब देखने के लिए, इनको कोविड ना हो या पहले ना हुआ हो, क्योंकि हम चाहते हैं उन पेशेंट्स पे हम ये टेस्ट करें या उन लोगों पे जिनको पहले कोविड नहीं हुआ. तो चांसेस यही है कि डे 1 पे जब वो विजिट करेंगे, जब उन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन किया है, तो फिर हम उनको जो वैक्सीन की जो पहली डोज है हम उसको देंगे पेशेंट को, और उसके बाद हम उनको एक डायरी देंगे और उनको बताएंगे कि कोई भी अगर आपको सिम्टम्स होते हैं आपने इसमें रिकॉर्ड करना और हमें रिपोर्ट करना है. उसके बाद हम
उनको ये भी बताएंगे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मोस्टली यही होता है कि जिस अब बाजू में दिया जाता है उनमें, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेन या रेडनेस हो सकता है जिस तरह दूसरी वैक्सीन्स करती हैं। तो या वो माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं जिस तरह एक्स एंड पेन्स या फीवर। तो ये एक्सपेक्टेड है कि किसी भी वैक्सीन के साथ। फिर हम वो सब्जेक्ट या जो वॉलंटियर है उसको दोबारा बुलाएंगे डे 14 या 21 पे, और फिर हम उनको दूसरी डोज देंगे। अब उसमें पहली डोज और दूसरी डोज या तो वैक्सीन होगी या प्लेसिबो होगी। प्लेसिबो का मतलब है वो डमी ड्रग, क्योंकि जब तक हम एक प्रोपोर्शन ऑफ जो वॉलंटियर्स हैं उनको एक प्लेसिबो नहीं देंगे, वो कंपेयर करना मुश्किल है कि जो वैक्सीन है उसका इफेक्ट हुआ या नहीं। तो उसके बाद हम ये भी करेंगे कि वो उनको पीरियोडिकली बुलाएंगे जो वॉलंटियर्स हैं एवरी 4 months और सो, ताकि हम उनके स्वाब ले सकें, ताकि हमें पता चले कि उनमें ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। या अगर कोई वॉलंटियर है जो कहता है कि मुझे फीवर हुआ है या सिम्टम्स हैं, फिर हम उनको टेस्ट करेंगे, स्वाब लेंगे देखने के लिए कि इनमें एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं। तो बेसिकली ये होगा, जो एक प्लेसिबो ग्रुप होगा और एक्टिव वैक्सीन ग्रुप होगा, हम उनको कंपेयर करेंगे देखने के लिए वैक्सीन के एक साइड इफेक्ट्स हुए किसी ग्रुप में कितनी उसकी परसेंटेज, या देखेंगे सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। और दूसरा हम देखेंगे उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हुआ है या नहीं हुआ, और दूसरा ये कि उनमें कोविड इन्फेक्शन रेट कितना हुआ है। फिर उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा, फिर हमें पता चलेगा ये वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। तो दूसरा ये ट्रायल्स यूके में कोई भी अगर क्लिनिकल ट्रायल होता है तो वो बड़ा एक स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड और रेगुलेटेड है। तो बड़े एक क्या कहते हैं स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है जो ट्रायल रिक्रूटिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि इसमें जो मेन चीज होती है कि वो जो है कि पेशेंट सेफ्टी को देखा जाता है कि कोई भी जब हम ड्रग या वैक्सीन टेस्ट करते हैं कि आया कि ये सेफ है या नहीं है। दूसरा ये हम उसको देखते हैं उसकी एफिकेसी या इफेक्टिवनेस कि ये कितना इफेक्टिव है। तो हम पब्लिक को ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि ये एक बड़े एक कंट्रोल्ड मैनर में और एक बड़े एक सेफ तरीके से ये वैक्सीन किए जाएंगे। और वो जो नर्सेज जो हैं, हमारी रिसर्च नर्सेज हैं, वो एक रेगुलर कांटेक्ट रखेंगी वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं। और कोई ऐसा सिस्टम भी हम करेंगे कि जो आउट ऑफ आवर्स अगर शाम के टाइम या रात के टाइम पेशेंट्स को या जो सब वॉलंटियर्स हैं उनको कोई साइड इफेक्ट हुआ तो हम फोन नंबर देंगे कि उसको फोन कर सकें एडवाइस के लिए। Thank you very much, Dr. Aziz. Now, although our primary audience is, of course, Yorkshire and Manchester, we do have listeners across the UK. So, where are the trials being conducted, Dr. Saralaya, and are people across the country able to participate? Very good question. Very good question. I would like to say that there will be a vaccine hub very close to wherever you live. So the vaccine trials are being coordinated that every part of the country have equal access to the vaccine trials, because we know taking part in vaccine trials, COVID-19 vaccine trials, are so important for us in this battle against this dreadful virus. So wherever you live in London, there are going to be 3 or 4 centers. The big hospitals will be taking part. If you're living in Manchester, we certainly know Manchester will be taking part. If you live in the Midlands, again, Birmingham and the big hospitals will be taking part. So if you inquire, once you have registered your interest and you get a call, and if you don't get a call, please ring the registry number and they will be able to direct you to the nearest center which is closest to you. Certainly in West Yorkshire, if you are living in Yorkshire, there are going to be 4 major vaccine hubs: Bradford, Leeds, Sheffield and Hull. And we are working for a 5th batch, which is around the mid-Yorkshire hospitals in Wakefield. So likewise, if you go towards Manchester, I know certainly the North Manchester General Hospital has a big hub. Central Manchester will have a hub. Liverpool will have a hub. So these are big centers which will be running the trials. And if you are in the Midlands, you know, Birmingham, places like Wolverhampton and around Birmingham will also be taking part. Leicester will be taking part. And then when you go down to London, there will be big centers around London. So you won't have to travel far
to take part in these trials. So when you're contacted by the center, basically the center which is closest to your postcode will hopefully be contacting you. So those living in the BD postcode, of course, will come to Bradford. If you're living in Halifax as well, you will come to Bradford because there is no center in Halifax, but we will ensure. And again, taking part in these trials is purely voluntary. There is no incentive for taking part. Apart from, we may incentivize your travel. We'll make sure that it's easier for you to come when you come to have those vaccines, with the doses of the vaccine. Thank you very much, Dr. Saralaya, for clearing that up. Dr. Aziz? ये जो कोविड वैक्सीन के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं ये मल्टी नेशनल और मल्टी सेंटर ट्रायल्स हैं, तो ये एक टाइम पे एक जो वैक्सीन है उसको मल्टीपल कंट्रीज में उसको पे ट्रायल किए जा रहे हैं, और अगर उसको यूके में उस पे ट्रायल किया जा रहा है तो मल्टीपल सेंटर्स में किया जा रहा है. सो ब्रैडफोर्ड एक सेंटर है वेस्ट यॉर्कशायर में. इसी तरह वो थ्रू आउट द कंट्री वो हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं या वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक जो हैं उनके लिए बेस्ट यही है कि वो नेशनल रजिस्ट्री पे वो रजिस्टर हों, तो उनके एरिया में जब क्लिनिकल ट्रायल होगा तो उधर की जो लोकल टीम है वो उनको कांटेक्ट करेंगे और इनवाइट करेंगे कि आके आप ये ट्रायल के बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप हिस्सा लें. तो ब्रैडफोर्ड में जो है वो हमारा सेंटर जो है वो ब्रैडफोर्ड रॉयल इन्फर्मरी में बेस्ड है, ब्रैडफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च उसको के नाम से. और पॉसिबल है कि एकल सेल ट्रीटमेंट सेंटर जो है वहाँ पे भी एक सेंटर बनाया जाए जिधर पेशेंट्स जा सकेंगे ट्रायल में पार्टिसिपेशन और वैक्सीनेशन के लिए. Thank you very much. Is taking part safe? There'll be a lot of people who may be interested in participating in these trials for the vaccine, but they might just be scared to take part. So is it safe? So, Raj, there is a lot of rumors going out in the South Asian community, the myths about COVID-19. First of all, I have to reassure, this country led the way through the National Institute of Health Research, which is the research wing of the NHS, in finding the first medicine that, and Dr. Aziz took part in that trial as well. And we saw that the recovery trial, which was led from the UK, and I have to be proud to say that in Bradford, nearly 50% of people who took part in the recovery trial belong to our own South Asian community. The recovery trial, which was led from the NHS, produced the drug called dexamethasone, which proved to save lives in COVID-19. So if you were on oxygen, it cut the lives by 25%. And if you were on a ventilator, it cut the life it improved the survival by 33%. So this is staggering. It's the NHS which led that recovery trial, which showed the world. So in COVID-19 vaccines, we want to lead the way as well and show to the world that we can produce a vaccine which will benefit. Imagine the only way of coming out of this lockdown, social distancing and masks. Now, with regards to safety, these trials, as I've told, have been strictly designed and peer reviewed by experts in the field of vaccines. They have been gone through rigorous procedures and what we call ethical consideration and approvals. And as I've said, while taking part in these trials, you will be closely monitored by the team. So, of course, some of the vaccines do produce some side effects locally from the injection. So I'm saying it's not, but it's very rare. It's very rare. And we have had in Bradford as well, over 150 trials we have conducted in our institute in asthma and condition called COPD. So we've got very wide experience. We are one of top 5 centers in clinical trials in respiratory disease. So in the country that we are talking about. And likewise, many other centers for your listeners in Manchester, in Midlands and in London. Similarly, all the centers that are taking part are chosen because of their expertise in managing patients who take part in clinical trials. So the answer to your question, it is safe, it is very well regulated, and it is governed by ethical consideration. And remember the 3 letters GCP, good clinical practice, is what governs clinical trials. And that is what we will put. And the patient, the volunteer taking part in this trial is the most important person. I mean, he will always be in the forefront of that. Thank you very much, Dr. Saralaya. Dr. Aziz?
Sorry, just wait. We're just having a slight technical issue. Dr. Aziz, unfortunately, I'm unable to unmute you because you've muted the microphone. So if you could, Dr. Aziz, there you go. Can you hear me now? Yes. Okay, sorry. Yeah. So, अगर किसी भी ड्रग को या वैक्सीन को ट्रायल टेस्ट करना हो पेशेंट्स में या वॉलंटियर्स में, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि क्लिनिकल ट्रायल में उसको किया जाए। तो जब कोविड की बीमारी शुरू हुई थी तो उस वक्त हमारे पास इसकी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं थी। तो यूके ने ये जो रिकवरी ट्रायल जो था वो स्टार्ट किया था, जिसमें उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट आर्म्स थी। तो हमने वो पेशेंट्स का मुजाहरा किया, उसमें हमने पेशेंट्स को रिक्रूट किया। तो फिर जून में जब हमने वो स्टेरॉइड या डेक्सामेथासोन आर्म को जब हमने उसको एनालाइज किया, तो वो प्रूव हुआ कि इसका फ़ायदा इस ट्रीटमेंट का और इससे डेथ रेट एक सिग्निफिकेंट तौर पे वो कम हुई है पेशेंट्स में जिनको स्टेरॉइड मिला था। तो ये उसी दिन ये पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी और ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुका था कि पेशेंट्स को आप कोविड के जो पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे हैं या जो वेंटिलेटर्स पे हैं, इनको आप स्टेरॉइड या डेक्सामेथासोन दें, तो इससे लाइव्स जो है सेव होती हैं। तो इसी तरह ये जो वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं पूरी दुनिया में और यूके के अंदर वैक्सीन की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स की फॉर्म में टेस्ट की जा रही हैं। तो ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जिसका मतलब है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें ड्रग की सेफ्टी को एवेल्युएट किया गया और वो सेफ है ड्रग। फेज 2 ट्रायल्स हो चुके हैं, उसमें भी ड्रग सेफ थी, इसलिए हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने प्रोसीड किया है। तो जो ट्रायल का एक जो प्रोटोकॉल होता है वो बड़ा एक उसको एक स्ट्रिंजेंट एक प्रोटोकॉल, बड़े सख्त प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। वो ट्रायल का जो प्रोटोकॉल या उसका जो तरीकाकार है उसको देखा जाता है कि ये सेफ है, उसका मेथडोलॉजी है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद जो ये ट्रायल्स हैं ये नेशनल वैक्सीन टास्क फोर्स ने अप्रूव किए हैं। तो जैसे डॉक्टर सराला ने कहा है, ब्रैडफोर्ड में पिछले 10-12 साल में हमने 150 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लिया है और उनको कंप्लीट किया है। वो अस्थमा और सीओपीडी जो स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज के ट्रायल्स थे। तो हमारा इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ब्रैडफोर्ड में, और हमारा जो एक सेफ्टी का रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल में हम उनको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं। उनको वो कहते हैं कि अगर इनको कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इवेंट हो हमें बताएं, और अगर किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में ये हो कि वो पेशेंट्स को या सब्जेक्ट्स को वो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो वो उस ट्रायल को स्टॉप कर देते हैं। तो इसलिए वो हम रीअश्योरेंस दे सकते हैं कि ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं जो कोविड के और जो यूके में होंगे और ब्रैडफोर्ड में होंगे वो ट्रायल्स सेफ हैं और पेशेंट्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। और ये बड़ा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड ट्रायल्स हैं। ख़ास तौर पे यूके में अगर आपने कोई भी काम करना है, अगर कोई रिसर्च करनी है या क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो बहुत ज़्यादा उसमें स्क्रूटनी है और उसमें मॉनिटरिंग और रेगुलेशन है। तो वो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक जो हैं वो हम उनको रीअश्योर कर सकते हैं कि पार्टिसिपेशन इन ट्रायल्स में सेफ है। Thank you very much. Now, we've touched upon it just a few moments ago, but can we reiterate why it's even more important that members of the South Asian community participate in these trials? So, Raj, I mentioned that Dr. Saralaya. registry has been set up, it's been live, and on the 15th of August, out of the 112 registrations, only 3% belong to the South Asian and 6% to the BAME community. Now, I have to put this question. If we do not have a vaccine that works in our population, and it's not been trialed in our population, when it comes in the market, how can we guarantee that it will work in the South Asian population? So it's very important for people from our own community to help to volunteer in these trials. The government is designing these trials and conducting them under the auspices of the National Institute of Health Research, which is the research wing of the NHS, only for our benefit, so that we know that the vaccine works in a section of our community. So every person, every sort of community which is representative of our wider population
needs to take part and put their hands up to take part in these trials. Because when the results come that it works in those community, when the vaccine comes, we know that vaccinated in the community will produce the same effect as produced in the trials. And we'll know that we'll be out of COVID-19. Remember, imagine, I have to remind your listeners, we have to think of the light at the end of the tunnel when we are going to get out of social distancing, when we can meet in large families, when we can go back to weddings in large numbers. Today, the numbers going to wedding and funerals sadly restricted. We can't even go and meet outside, in Bradford especially. We can't meet anybody outside our bubble because we are still in local lockdown. So how are we going to the world pre-COVID? By producing a vaccine that will work amongst us. We are the residents of Bradford. We are in the residents of the big cities where there are big South Asians. If we don't take part and prove to the world that this vaccine will work in our community, how are we going to get rid of this virus? So this is the question I'm going to ask your listeners. So we need everybody to help us with this. We are taking the great effort. A lot of sacrifices are made in COVID-19 from everybody, and especially people working in what we call people-facing jobs. They're putting their lives at risk every day. People in the healthcare sector, in care homes, in supermarkets, taxi drivers. We need to protect these people. They have taken risks for the last 4.5, 5 months. So we need to get a vaccine, and we need every member of our community to put their hands up to take part in these trials. Dr. Aziz. अगर कोविड-19 की जो बीमारी है इसने हर किसी को लोगों को परेशान किया, कारोबार रुक गए हैं, लोगों का मिलना जुलना या जो सोशल इवेंट्स हैं सारा कुछ रुका हुआ है या वो रिस्ट्रिक्टेड है. तो लाइफ को एक नॉर्मलाइज करने के लिए हमें ऑब्वियसली एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जो हम दे सकें या वैक्सीन दे सकें जो इस बीमारी को प्रिवेंट करे और लोग सेफ फील करें जब उनको वैक्सीन मिले कि वो प्रोटेक्टेड हैं. सो कोई भी जो हम अगर मेडिसिन हम देते हैं या वैक्सीन देते हैं तो वो हमें एक रियल लाइफ वो चाहिए, उसकी इफेक्ट जो हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये आप 20 से 50 साल के लोगों में जो वाइट पॉपुलेशन है उनमें एक वैक्सीन ट्रायल करें, तो अगर आप प्रूव करते हैं कि उनमें इफेक्टिव है, आपको ये नहीं पता कि जो बेम पॉपुलेशन है या जो एशियन पॉपुलेशन है उनमें इफेक्टिव है या बूढ़े लोगों में इफेक्टिव है या दूसरे लोगों में इफेक्टिव है जिनमें कंडीशंस हैं. ब्रैडफोर्ड में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक एशियन बैकग्राउंड से है. इसलिए कल अगर कोई वैक्सीन मार्केट में आती है और अगर हमने उसको ट्रायल नहीं किया एशियन पॉपुलेशन में और बाद में हम एशियन पॉपुलेशन को देते हैं तो हो सकता है वो काम करे, हो सकता है वो सेफ हो सकता है वो ना हो. इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमने अगले विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर हमने एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना है इस कंट्री में और जो एरियाज हैं जिनमें एक एशियन या बेम पॉपुलेशन है तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो लोग ट्रायल्स में हिस्सा लें ताकि हमें पता चल सके वो जो पर्टिकुलर वैक्सीन है उनमें इफेक्टिव है या नहीं है. वरना ये होगा कि वैक्सीन आएगी हम लोगों को देंगे और बाद में ये भी हो सकता है लोग कहें कि हमारे अंदर ये इसकी सेफ्टी का प्रॉब्लम था या इतनी इफेक्टिव नहीं थी. तो इसलिए ये हमारे ऊपर एक मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रायल्स में हिस्सा लें ताकि इस वैक्सीन को प्रॉपर्ली एक एवेल्यूएट किया जा सके उनकी सेफ्टी और उनकी एफिकेसी को, ताकि जो रिजल्ट्स पब्लिश होंगे इन ट्रायल्स के उनमें ये बता सकें जो रिसर्चर्स या इन्वेस्टिगेटर्स हैं कि ये वैक्सीन जो है अगर हम ये बेम पॉपुलेशन या एशियन पॉपुलेशन को देंगे तो उनमें भी इफेक्टिव होगी. तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें जो एशियन पॉपुलेशन है, खास तौर पे जो ब्रैडफोर्ड की एशियन पॉपुलेशन है, ताकि हमें पता चल सके ये एक वैक्सीन उनमें कल काम करेगी या नहीं. Thank you very much. When can we expect a vaccine? Let's say we achieve the numbers or number of participants. When can we expect a vaccine, Dr. Saralaya? So the big question really, we need to go through these phase 3 trials, Raj, to ensure that the vaccines which have been in the early phase of development work in large sections of our community. So the answer to your question, when will a vaccine come?
it's anybody's question. Anybody can give you different answers with this. But the most important thing, the science is behind developing a vaccine. The community is working overtime. And fingers crossed, if the results on these phase 3 vaccines are successful and show that they are producing the desired immunity that we want against COVID-19, against the deadly coronavirus, then a vaccine is imminent. But we need to conduct these trials first to make sure that the vaccine works in our population when large number of volunteers take part in these trials. Until that, we do not know when we'll have a vaccine. So this is the crucial stage in a vaccine development process. The phase 3 program in any vaccine development is crucial in bringing out a vaccine. If we pass through this phase successfully, with large number of people putting their hands up, taking part, and we get a successful result, then the end is not far. Thank you very much. Dr. Aziz? जी ये वैक्सीन्स तैयार हो चुकी हैं, वो टेस्ट हो रही हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, उनकी फुल जो एफिकेसी है उसका अभी हमें पता नहीं है। तो वैक्सीन मार्केट में उस वक्त तक अप्रूव नहीं होगी जब तक ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं होते और उनके रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन उससे पहली स्टेज ये है कि हमें इतने पार्टिसिपेंट्स या वॉलंटियर्स चाहिए और जल्द अज जल्द चाहिए ताकि इनको वॉलंटियर्स या जो सब्जेक्ट्स जो इनको रिक्रूट हम कर सकें, वैक्सीन दें। इनको ट्रायल्स का जो पीरियड होता है वो एक रिक्रूटमेंट का जो भी है 2 या 3 महीने में, उसमें हम वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको रिक्रूट करें ताकि इसके कोई मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें मिलें। अगर हम एक क्लिनिकल ट्रायल चलाते हैं और उसमें सपोज करें 10,000 पेशेंट्स यूके से चाहिए लेकिन हमें सिर्फ 5,000 पेशेंट्स मिलते हैं, तो उसका आप एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, वो ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि वैक्सीन अल्टीमेटली इफेक्टिव हो लेकिन वो उस वक्त तक वो वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिलेगी पब्लिक यूज के लिए जब तक वो रिजल्ट्स कंक्लूड नहीं होते। सो इसलिए ये हम ये लोगों से कहेंगे कि इसमें वॉलंटियर करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि ये ट्रायल्स कंप्लीट हो सकें, ताकि हमें पता चल सके ये इफेक्टिव है वैक्सीन, और ताकि जो उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो उसको एक पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल कर सके। तो अगर लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे तो उम्मीद है कि जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं, पर्टिकुलरली जो अर्ली 2021 है, उसमें काफी चांसेस हैं कि ये वैक्सीन पब्लिक यूज के लिए इस कंट्री में अवेलेबल होगी। Thank you very much for that. Now, as we approach the end of the interview, I would ask, we are in local restrictions, especially in Bradford, Kirklees, Calderdale, parts of Greater Manchester. What advice would you give to our listeners about coronavirus, about COVID-19, about following the local restrictions, and also if you could reiterate how to participate in the trials and a final message? Dr. Saralaya, sorry. Thank you, Raj. As you will know, the greater parts of West Yorkshire, where we live, are still in local lockdown. The cases are still turning positive in the community. Community testing is now quite widespread. And unfortunately, we have continued to see steady reporting of cases and the numbers are not going down. So my advice to the population, again, Dr. Aziz will probably echo this, the number of patients that are coming to our hospital who are sick with COVID-19 continue to belong to the South Asian community. Today, most of our patients on the ward, I've done a ward round today, most of our patients with COVID-19, over 90% of them belong to South Asian community. Now, it is very important. Why is this population? There are various factors which we won't go into. There is multi-generation household, so there are members of the family going out to work, catching the infection, coming in. But it's very important that the younger generation in Bradford take some responsibility in protecting our elders, because we are seeing a lot of what we call asymptomatic mild infection in the younger generation. But unfortunately, it's the older generation who are then getting affected with severe COVID-19, and some of them sadly have lost their lives. So it's very important to listen to the government messaging. If you're not allowed to meet friends, today also I've seen, if you go out on a Sunday in Bradford,
the streets and especially where the restaurants are fully crowded with youngsters. So it's very important that they listen to the messaging coming from the government. Please follow the restriction, because what you do does not only affect you, but it affects members of your family who are getting affected from COVID-19 because of not their fault. So it's very important that we stick to the messaging. The local lockdown is in place for a scientific reason. That's because we are still seeing increasing number of cases in our community. Some people have dismissed this, saying that is some conspiracy. It is not a conspiracy. Some people say COVID-19 is no longer killing, but Dr. Aziz will tell you COVID-19 is not like flu. We are seeing lots of people who had COVID-19 in April and May still not recovered. They are suffering the harmful effects. We had a patient that day who's not able to get his memory back very well. He's not able to focus on his job. He's lost his concentration. So this is not an ordinary virus. We have to protect ourselves, but we also have to protect the rest of our family by listening to the government messaging. And a final message is the only way we know COVID-19 has affected every one of us. And I say doctors included, nurses included. A large number of doctors have also died nationally from COVID-19. A lot of nurses have lost their job, people in the care sector. Now, we have made huge sacrifices. We continue to work very hard to get people, treat people, but we have been working tirelessly for the last 4.5 months, 5 months. We know that there's a winter is imminent on us, where we are going to be faced with the challenge of common flu as well as COVID-19. So please also take part. Your GP practices are going to be doing the flu campaign. Please do volunteer. The uptake of the flu vaccine in the Asian community is very low, sometimes less than 20%. We need to increase it up to 50, 75%. That is the ambition. So everybody get vaccinated from the flu, for which we know there is a proven vaccine. At least we won't get flu. Because now imagine in winter, you come into hospital with flu or COVID, we won't know how to differentiate. Yes, we will do a test to differentiate, but it's very difficult to differentiate them clinically. So it's very important people take part in the national flu vaccine. Your GPs will be sending out pamphlets, messaging, text messaging to take part and have the flu vaccine. And lastly, please encourage your near and dear ones and anybody able to volunteer for the COVID-19 vaccine trials, because the only way we are going to find an efficacious vaccine which will work in our community is by taking part in these trials, so that we can get out of this dreadful pandemic and go back to a way of living that we've always been used to. Freedom, back to normal ways of meeting our friends, back to going to large weddings, back to our gatherings with all relatives and friends, and able to see near and dear ones in hospital. Visiting in hospital is banned now. So please do take part. Think of what we can achieve in the next year or so. And I think if we all take part in this, we are going to beat this dreadful virus very soon. Thank you very much, Dr. Saralaya. Dr. Aziz, your final message? जी तो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन रेट है ये अभी भी नेशनली है, तकरीबन रोजाना 1000 के करीब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं. तो उसमें ज्यादातर वो जो ब्रैडफोर्ड हो गया, मैनचेस्टर, ओल्डहम, रॉचडेल ऐसे एरियाज हैं जिनमें एशियन लोगों की एक ज्यादा तादाद है. तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेथ रेट कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों की डेथ हो रही है. और हमने ब्रैडफोर्ड में ये जुलाई में और अगस्त में डेथ हुई है हॉस्पिटल में कोविड की वजह से. और कुछ ऐसे लोग थे कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनकी डेथ होगी. वो कुछ पेशेंट थे जिस तरह 40s में थे और कोई पहले उनको बीमारियां नहीं थी, लेकिन उनकी भी डेथ हुई है विद इन द लास्ट मंथ. सो इसलिए वो कंप्लेसेंट अगर हम होंगे कि अब ये इन्फेक्शन रेट कम है, डेथ रेट कम है, हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, तो ये ठीक बात नहीं है. तो हमने पहले भी रेडियो प्रोग्राम सनराइज पे किए थे ये मई में और जून में, और इसमें रीइटरेट किया था की थी लोगों को कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बड़ा जरूरी है, और जो फेस कवरिंग्स वाला जो है स्टेप है ये एक इंतहाई जरूरी है. और जो इवेंट्स जो हैं, पब्लिक इवेंट्स हैं, वेडिंग्स या फ्यूनरल्स हैं, उन पे ओवर क्राउडिंग या जो रेस्टोरेंट्स में ना करें. सो ये बीमारी अभी एग्जिस्ट कर रही है, अभी नहीं गई, इससे भी नुकसान हो रहा है. तो इसमें जब तक हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो हम इसको बेनिफिट्स नहीं देखेंगे. जिन लोगों को कोविड हुआ था, कोरोना वायरस हुआ था मार्च अप्रैल में, जिनको सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज हुई थी, वो अभी तक रिकवर नहीं हुए, और अब हम फ्राइडे को कोविड क्लिनिक में उन पेशेंट्स को देख रहे हैं.
تو مزید ان کی ایویلیویشن کر رہے ہیں. سو دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریونشن جو ہے وہ مختلف جو سوشل ڈسٹینسنگ میجرز کے ساتھ ہوگی یا ایک سکسیسفل ویکسین کے ساتھ ہوگی. اور ویکسین اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں آئے گی یو کے میں یا دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جب تک وہ لوگ والنٹیئر نہیں کریں گے کلینکل ٹرائلز میں, جب تک وہ ویکسین کی ایک ایفیکیسی پروو نہیں ہوگی. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ پورے کنٹری سے اور خاص طور پہ براڈ فورڈ میں جو ہماری پاپولیشن ہے اور جو ایشین پاپولیشن ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں ٹرائلز میں, تاکہ ہم ریئل ٹائم جو ہے ویکسین ان کی ایفیکیسی ان لوگوں میں ٹیسٹ کر سکیں اور تاکہ کل وہ اس سے بینیفٹ کریں, ان کے ریلیٹیوز بینیفٹ کریں اور جو ایک وائڈر کمیونٹی ہے وہ بینیفٹ کریں. Thank you very much to Dr. Aziz and, of course, Dr. Saralaya for joining us on today's Sunrise Radio Health in Focus. If you've just tuned in, well, don't worry, you haven't missed it. The audio for this interview will be available as a podcast shortly on our website, sunriseradio.fm. Thank you very much, and until next time, look after yourselves and each other.